Hello everyone, welcome to the video. In this video, we are going to discuss about some basic Excel functions. So Excel में generally more than 500 functions available हैं, जिनमें financial functions, mathematical function, statistical functions, different type के functions हैं. और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो formula tab के अंदर जाकर. You can see financial, logical, text function, date and time functions, lookup and reference, math and trigonometric function, and there are many more functions. Okay. But in this video, we are going to cover a few basic functions which are very much required while using the Excel. So first of all, अगर मैं ऐड करना चाहूँ कुछ वैल्यूज को, so वहां पर एक फंक्शन काम आता है sum. So as the name suggests sum, ये वैल्यूज को sum up करने का काम करता है. So let's select the value number 1, comma number 2, and then number 3. So it will sum the value. Okay. Another way of applying sum is you can directly provide a range. So अगर हम एक सीधे range provide कर दें, तो अगर हम एक range provide कर दें, so it will also give you the same answer, and you can just drag it down to get the total value. Okay. So this is how sum works. Just like sum, there is another function called average. So in average, again you have to provide numbers like this. This is my number 1, number 2, and number 3. So average, as the name suggests, हमेशा average count करके लेकर आएगा आपके लिए. Similarly, average के अंदर भी you can provide a range, like you can select all these numbers together and then enter. So it will provide you average of all these numbers. So other than this, sum and average, there are more functions like count, max, min. So count is a function which counts the value. So if I will select this and then, so it will show me 0, because count only can count the number or the numeric values. So if I will select this range, so it will provide me answer. But अगर मैं count में कोई एक text value को select करूं, so count उसे count करने में able नहीं होगा, because count only works on the numerical values. So अगर आपको अल्फाबेटिकल वैल्यूज भी काउंट करनी है, यानी कि जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उन वैल्यूज को भी काउंट करना है, सो यू कैन प्रोवाइड लाइक दिस काउंट ए. ओके. तो काउंट ए जो करेगा वो दोनों वैल्यूज को काउंट कर सकता है, इवन नंबर्स एंड टेक्स्ट बोथ. बट काउंट की अगर हम बात करें तो काउंट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट कर सकता है. ओके. सो अगर मैं काउंट ए को अप्लाई करूं, सो काउंट ए के अंदर भी आई कैन प्रोवाइड अ रेंज एंड इट विल काउंट द कंप्लीट values which are present there. Okay, so this is count and count A. Similarly, there is another function called max. So max हमेशा maximum number लेकर आएगा. अगेन इसमें भी आप 1 by 1 एक एक नंबर का रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्स. ओके. सिमिलरली एक और फंक्शन होता है मिन. तो मिन भी इसी तरह से काम करता है, बट ये मिनिमम वैल्यू को लेकर आएगा. आप मैक्स विल फेच यू द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिन विल फेच यू द मिनिमम वैल्यू. ओके. मिन में भी यू कैन प्रोवाइड नंबर बाय नंबर वैल्यूज like this, or you can provide the complete range also.
सो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं और जिनमें हमने डिस्कस किया सम, एवरेज, काउंट, काउंट ए एंड मैक्स एंड मिन। सो काउंट और काउंट ए में डिफरेंस ये है कि काउंट ए ओनली नंबर्स को काउंट करता है, while count A can count both numbers as well as alphabets, or you can simply say text. Okay, so sum will sum up the value. Average आपके लिए एवरेज लेकर आएगा जितने भी नंबर्स आप प्रोवाइड करोगे। काउंट ओनली नंबर्स को काउंट करेगा। काउंट ए बोथ नंबर एंड टेक्स्ट को काउंट कर सकता है। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू लेकर आएगा और मिन मिनिमम वैल्यू लेकर आएगा। सो ये तो कुछ जनरल फंक्शंस हैं, बट अगर हम इन्हीं के साथ कुछ कंडीशंस को ऐड कर दें, जैसे कि इफ कंडीशन। इफ कंडीशन का यह मतलब है कि हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, एक लॉजिकल कंडीशन हम देंगे कि अगर पेमेंट मेथड में कैश है तभी वैल्यूज का सम करना, तभी फीस का सम करना। सो उसके लिए एक फंक्शन आता है जो कि होता है सम इफ। सो सम और इफ को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि सम क्या करता है, वैल्यूज को सम करने का काम करता है, और इफ एक कंडीशन के ऊपर काम करेगा। इफ एक लॉजिकल ऑपरेटर है। सो इफ सम इफ की अगर हम बात करें, सो इसके सिंटैक्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहले इट इज आस्किंग फॉर रेंज। सो सबसे पहले आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है, उस रेंज को सेलेक्ट करना है जहां पर आपको क्राइटेरिया अप्लाई करना है। So you can apply criteria like I want to select only the cash payments and then sum range, कि रेंज का सम करना है, कौन सी रेंज का सम करना है अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। सो सम इफ के अंदर सबसे पहले हमने रेंज प्रोवाइड करी, उस रेंज से रिलेटेड क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया, एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग सम रेंज कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो कौन सी रेंज का सम करना है। सो आई सेलेक्टेड दिस रेंज कि अगर आपको कैश मिलता है तो इसमें से फीस का सम कर देना है। सो 3240, it is the total payment which is received by the cash payment. So just like this, sum if, there is another function called sum if s, because in sum if I think you have noticed this thing कि range है और criteria है, so we can provide only one criteria in sum if। सम इफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एक ही क्राइटेरिया दे पाओगे। सो इसलिए अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज देने हैं, मल्टीपल रेंजेस सेलेक्ट करनी है, सो देन यू हैव टू यूज सम इफ एस। तो फॉर सम इफ एस, first you have to select the sum range. So this is my range where I want to do the sum criteria range 1। so सबसे पहले वो रेंज सेलेक्ट करनी है जहां पर आपका क्राइटेरिया 1 अप्लाई होगा, and then you have to select your criteria. So again I am selecting the same criteria for cash. Then it will ask you about the criteria range 2 कि आपका दूसरा क्राइटेरिया कहां पर है, कौन सी रेंज पर है। So let's select this range, and then you have to define what is your criteria 2 कि आपका criteria 2 है क्या। So criteria 2 is I am saying, let's say where the value is greater than 150। okay, सो सम इफ एस में आपने जैसे देखा कि दो कंडीशन मैंने लगाई, एक तो पेमेंट मेथड में कैश होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि टोटल ग्रेटर देन 150 होना चाहिए। सो यू कैन सी 2160 इज फाइनल आंसर। बिकॉज यहां पर सम इफ एस दोनों कंडीशन को चेक करेगा, मींस पेमेंट मेथड भी कैश होना चाहिए और टोटल भी ग्रेटर देन 150 होना चाहिए। जहां पर जिस स्टूडेंट के लिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, केवल उसी की फीस का सम यहाँ पर आपके पास आया है। दैट इज वाई इसमें सम इफ और सम इफ एस में दोनों में वैल्यूज अलग अलग आई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया था जब हमने सम इफ को यूज किया, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट मेथड कैश होनी थी, और वहीं जब आपने सम इफ एस को यूज किया तो वहां पर पेमेंट मेथड कैश भी होने चाहिए और टोटल भी ग्रेटर देन 150 होना चाहिए। इसी वजह से दोनों के आंसर अलग अलग आए हैं। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सम इफ और सम इफ एस को यूज किया, उसी तरह से
एवरेज इफ और एवरेज इफ एस को यूज करते हैं। सो एवरेज इफ सेम सिंटेक्स बिल्कुल जैसे सम इफ का होता है। रेंज यू हैव टू सेलेक्ट, सो दिस इज माय रेंज। क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया लगाना है, अगेन आई एम अप्लाइंग द सेम क्राइटेरिया। एंड एवरेज रेंज मींस अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, मींस इस रेंज में कैश मिल जाता है, तो एवरेज कौन सी रेंज से लेकर आना है, इस रेंज से लेकर आना है। ओके, सो द एवरेज फीस पेड बाय कैश is 1080 rupees. And similarly, just like sum if s, we can use average if s for multiple condition, because sum if में हम एक ही कंडीशन लगा सकते हैं, सेम ऐसे ही एवरेज इफ में भी हम एक ही कंडीशन लगा सकते हैं। बट बिल्कुल जैसे सम इफ एस में हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही एवरेज इफ एस में भी हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट एवरेज रेंज। So I want to do average of this range. Then criteria range 1. So this is my criteria range 1. And then I have to define what is my criteria. What is my criteria? So then I have to define what is my criteria. So my criteria is cash. Okay. Then criteria range 2, I have to select. So this is my criteria range 2. Again, I am applying the same criteria. So this should be greater than 150. Okay. And then parenthesis close. बिल्कुल सम इफ एस की तरह यहाँ पर भी चेक किया गया कि कहाँ पर कैश होगा और वैल्यू जो टोटल वैल्यू है वो ग्रेटर देन 150 होगी, वहीं पर से एवरेज निकाला जाएगा। अब बिल्कुल जैसे सम इफ और एवरेज इफ है, वैसे ही आप काउंट इफ का भी यूज कर सकते हो। सो काउंट इफ में भी आपको सबसे पहले रेंज आइडेंटिफाई करनी है, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर क्राइटेरिया कि आपका क्राइटेरिया क्या है। तो इस रेंज में अगर कैश मिल जाता है तो दैट मीन्स उसे काउंट करना है। So there are only three values of cash. Now remember one thing. Count को जब हम यूज कर रहे थे तो count अकेला टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं कर सकता, लेकिन count if ये कर सकता है। Okay. Similarly, you can apply this over any other criteria, any other range also, like this. And my criteria is where the value is greater than 90. So only three values are there where value is greater than 90. Okay, so count if can work on both text as well as numbers. जैसे हमने count if यूज किया, ऐसे ही count if s होता है। count if s में बिल्कुल मल्टीपल क्राइटेरिया, जैसे एवरेज इफ एस में भी हमने मल्टीपल क्राइटेरिया को अप्लाई किया, सम इफ एस में भी हमने मल्टीपल क्राइटेरिया को अप्लाई किया। सिमिलरली उसी तरह ही काउंट इफ एस में भी हम मल्टीपल क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज 1 दिस, and your criteria should be cash. Then criteria range 2 this one, and criteria should be a value greater than 1000. So ऐसी दो वैल्यूज हैं जहां पर पेमेंट मेथड कैश है, एंड जो वैल्यू है, जो फीस है, वो दैट इज ग्रेटर देन 1000। सो काउंट इफ एस में भी दोनों कंडीशन चेक की जाएंगी। So notice one more thing, when we were doing sum if s or average if s or sum if or average if, we have to provide the sum range or average range. But here on the count if and count if s, we do not have to provide any count range, because by default it is counting that range where we are applying the criteria. Okay. So जहां पर भी आप क्राइटेरिया लगाओगे काउंट इफ या काउंट इफ एस में, वहीं पर आपका काउंट काम कर जाएगा। ओके, सो अगेन आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि काउंट कहां पर करना है। And similarly to this, like we understood about sum, average, count, max, min, and then we applied some advanced functions like sum if s, average if s, count if s. Similarly, there are these if family functions also present for max if s and min if s. So max if s, remember one important thing.
मिन और मैक्स के लिए इफ फैमिली नहीं है बट इफ एस फैमिली है। ओके, सो मैक्स इफ एस इज अ फंक्शन बट मैक्स इफ नाम का कोई फंक्शन नहीं है। सिमिलरली मिन इफ एस नाम का फंक्शन है बट मिन इफ एस नाम का कोई फंक्शन, सॉरी, मिन इफ मिन इफ एस नाम का फंक्शन है बट मिन इफ नाम का कोई फंक्शन नहीं है। सो रिमेंबर दिस थिंग। Then max range. So in this you have to provide a max range. From which range you want to get the maximum value. So I want to get maximum value from this range. And then criteria range. So this is my criteria range. And what is my criteria? My criteria, again, I'm putting the same criteria cache. And you can select the criteria range 2. So this is my criteria range 2. And then what is your next criteria? What is your second criteria? So my criteria is greater than 150. So this is the maximum value where the payment method is cash and the total is greater than 150. तो जब हम मैक्स इफ एस यूज कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं है कि हम एक कंडीशन लगाकर नहीं छोड़ सकते। सो यहाँ पर भी आप एक कंडीशन लगाकर इसे मैक्सिमम वैल्यू को फैच करा सकते हो। जैसे ये मैक्स रेंज हो गई, ये आपकी क्राइटेरिया रेंज 1 है एंड योर क्राइटेरिया इज कैश। ओके, सो एक क्राइटेरिया पर भी ये काम करेगा। सिमिलरली हम मिन इफ एस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जहां पर से हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज द मिनिमम रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज 1, सो दिस इज माय क्राइटेरिया रेंज 1 एंड देन योर क्राइटेरिया, again criteria range 2 and then criteria for range 2. Okay, so this will fetch you the minimum value. जैसे हमने मैक्स इफ एस को एक कंडीशन लगाकर यूज किया, सिमिलरली आप मिन इफ एस को भी एक कंडीशन के साथ यूज कर सकते हो। सो आई एम रिमूविंग दिस कंडीशन एंड विथ सिंगल कंडीशन आल्सो देयर इज सेम वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट एंड काउंट ए। Then we move to some advanced functions like sumif and sumif s, maxif s, minif s, and count if s, average if, and average if s. Okay. So I hope you would be able to understand it. That's all for this video. Thank you very much.